Session of International and Sustainability ICOMS 2023. Today, we gather to delve into the theme that shapes the trajectory of our industry, future of opencast mining technology and way forward. This conference is a testament to our commitment to innovation, sustainability, and the responsible extraction of Earth resources. We have with us our distinguished speakers, experts, and thought leaders from across the globe who have converged to share their insights, experience, and visions for the future of opencast mining. As we embark on this intellectual journey, let us foster an environment of collaboration, learning, and inspiration. We have with us Shri Jitendra Malik sir, Director Technical Operations NCL, Shri Rajneesh Narayan sir, Director Finance NCL, Professor Devashish Dev from IIT Kharagpur, Professor S.S. Rai from IIT ISM Dharwad, Professor Sanjay Kumar Sharma sir from IIT PHU, and Professor G.K. Pradhan sir from AKS University Tatna. Throughout the sessions, we will explore the cutting-edge technologies, sustainable practices, and the transformative role opencast mining plays in shaping our world. This is not just a conference, it is a nexus of ideas, a crucible of innovation, and a platform for forging the future. I encourage all the participants to actively engage in discussions, pose thoughtful questions, and leverage the opportunity to build networks that transcend geographical boundaries. Let us collective wisdom pave the way for the more sustainable, efficient, and responsible future in opencast mining. As we all know, in the dance of existence, sustainability is the choreography that ensures the planet's enduring grace. I request all the participants to please put your hands together for all the distinguished speakers present here. Now I hand over the session to our Director Technical Operations, sir, for convening the plenary session, that is keynote session of ICOMS 2023. So, welcome you all this first session. Here we are having is this section is chair of last year. She gives the give insights into. I request my technical team to please put on the presentation
for Professor Devashish Dev from IIT Kharagpur. I request all the participants to please put your hands together for our distinguished speaker from IIT Kharagpur. Thank you, Mr. Chairman. I am really privileged to be here and sitting on the dais this August personalities. And I'm happy to see the audience. We request after we've done our talking, ask some questions that become a very like. So I will start. I made about 5 to 7 minutes presentation because you see the way forward to surface mining is a very vast topic. So I thought these days a lot of talk is going on about this smart mining, smart, smart devices, and quote unquote smart. Excuse me, sir. Excuse me. Because the volunteers here just announced. So first of all, let me go a little back. Okay. So first, let me talk about who are the smart people before going into smart device, smart machines, and smart mining. So who are the smart people? What characterize smartness? So go next. So what are the qualities? Smart we mean intelligent. The person should be intelligent. So you see, just because a person is intelligent doesn't mean he is smart. Because there is a word called street smart. So it's not necessarily intelligence related to smartness. So next, a smart people, in my mind, should have a quick thinking, quick decision making ability. Otherwise, may be intelligent, but it takes long time to take a decision. It's not smart. No. The adaptability. I think this is one of the distinguishing character, the smart and intelligent. That he is adaptable anywhere. You put him in any situation, he see it positively and find a way to make it around so that everything moves. And the last one is, I think, because we are human being, so a smart person should have a caring and feeling for others. So he or she not only for himself or herself, it is for the community. In my thinking, these four qualities are there. The people are smart. So next, I need not have to tell why he is smart, right? The pure intelligence. Okay, the Albert Einstein. You search in the Google, who are the smart people? First name will come as Albert. Second, so next, Jamshedji Tata. The thought that everyone in this country will have a Tata starting from he wakes up and in the night he goes to sleep. This is a mind-boggling thinking process. That he wants Tata to be in everyday's life to every community. And that he has achieved from salt to satellite. Next, I need not have to tell anything about her. I think we all know what she has done to mankind. And the most favorite is Swami Vivekananda. I think if I have to say who is the smart guy in this planet ever born, my choice is. So now, there is some buzzword is going on that because AI is coming and suddenly the human being will be erased from this planet.
We have to erase this guy. Not possible. So we are here. Smart people will be there. Whatever smart device we make. Next. So what are the smart devices? So we have, everybody has now this mobile. This is the smart device, the smartest device ever human has made. Apart from that, smart watch, smart chashma, tabs, and all these stuff. But what is their qualities? Okay. First quality is all smart devices are context sensitive. That means you are giving a sensor to it to sense only this part. And then it must have a automotive computing facility, which can be driven by AI, cannot be driven by AI. But there is an algorithm behind it. How that sensor will work and how this sensor is going to use the data so that you can interpret. Connectivity is the key in smart devices. Like if you do not have internet, this world now will stop, more or less. So the smart devices should talk between them. That is we call Industry 4.0. And they must also talk with. So this is what is currently the smart device. Okay, what we have. Next. So what does make a smart machine then? Okay. So if you have a smart device on a machine, does it make that machine smart? No. That's a pseudo smart. Let me give you an example. You are driving, you have a mobile and you have a GPS system. Does this make your car smart? No. If that car used to take the GPS signal by himself and drive automatically, then that car is. So you see, there is a big difference. You are putting a smart device into a machine or into anywhere. Doesn't make that machine or that system smart. Okay. So we are working with pseudo smartness. We are not into the actual smart machine. Next. So now what we are, bestowed upon or many companies are throwing into us that we are going to digitize your entire thing. Yes, they can do that. But does that make your mind, a smart OCP? It's still a pseudo OCP. What we are doing is the data which we are not able to analyze very quickly, they will do it so that we can take quote unquote smart decisions. Okay, so there is a distinct difference between smart machine and smart OCPs or a smart device. Okay, there is a distinct. That's why I'm telling you in so many words. Now the sensor can be put in everywhere, and we have those sensors, and these companies are going to give us those sensors. But all these sensors need to be run by some algorithm, which is domain specific. In this case, this is mining. So we need to give the input what they need to analyze. Next. Okay, now this is the Internet of Things. There are some examples that already it is working in Australia and China. I think if you do the Google search, you will know there is a manless or the driverless dump trucks moving more or less 1200 kilometer away from park and almost 400, 600 kilometer there. The quarry is completely manless. Everything is manless. Those are the smart machines. The shovel calls the dumpers. Dumpers come to the shovel, automatically dumps, and that dumper carries that ore certain place. Okay, so these smart machines are already being operated. So
Definitely, the theme of this talk is that we have to move forward. So we need to change ourselves, right? We are going to move forward unknown territory. Okay, this is the area where we are going, where mining engineering, quote unquote, degree doesn't require knowledge, but we are going there. So there is a society of mining professors. Uh, they are mostly US based, not America based, and they every now and then they publish future of mining, what is going to happen, and the mine curricula and all this. So we regularly. Now these are the four coaches came in 2019, just before COVID. What they say that we are going to become endangered species very soon. Okay, no longer needed the world of automated mines because we are not that input to our students. Number one. Number two question about the mechatronic engineers, IT engineers, whether they will be sufficient to run a mine. If this is the direction we are going, are there enough? The question they are. So if we have to, if the answer is no, then what do we have to do? We have to change our tactics. So the future discipline of mining, what is going to happen to next? These are the questions they pose to us. So this slide is completely my and what I think the entire philosophy of mining engineering and its curricula need a relook. I am telling it in my department since last 5 years. Okay, but nothing has changed. Very delta. The example is why we are still calling ourselves a coal miner. I don't understand that. See, now NCL is in a business of or generation of solar power. So rather we call ourselves coal miner. Why we are not calling ourselves, you know, the energy? So we can very well say it's not coal mining engineering. Say energy resources engineering, and we cover all gamut of energies. Renewable, non-renewable, solar, hydro, everything. So we are in business of energy. I think then our curricula will also go into that area. Similarly for metal mine, maybe mineral resources. See the hydrogen, we are forgetting who is coming and going to threaten us. It's the hydrogen. And it is coming very fast. But are mining engineering or mining industry are poised to take a piece of that pie? I don't see anywhere. So hydrogen we are giving it to somebody else. You do it. So this part of energy we are not going to take. So we need to rethink. Each mine in the future will have some smart devices. So we better understand them and adapt them very fast. And entire curricula, entire industry should be driven like DG mining we are talking. Next. So these are the technologies which are going to be adopted whether we like it. Going to be adopted. If we do not do, somebody else will. So better we do it, better we understand that, and we start implementing this. So these are the things. I'm not going to repeat it. Next, my last slide is still the implementation is not so easy because we do not understand most of the part. We need to be making collaboration, the experts who knows this, and we implement them. Even some mines, PG will be not working. Forget about 5G technology. Somebody sells, it will not work. So the next slide. So now let us discuss. I have given my perspective on a tiny part, and if you can find some. Thank you.
Thank you, sir. Been topic is very fast. And then by itself, well, not by itself, human being, human intervention. Now I would request you. They have some. I need. So I have to say mine in one word. I would say INSCAL has, based on last year's that is has said, starting 18 years back out of part of this left and that time it was, somebody can correct me, 40 billion tons. And after that last 18 criminal. That's why, and also we that the sustainability is gradually becoming a bigger issue. It's also expanding its like that. No longer just the warming issue, but it talked about the safety index was driven by the this kind of volume like 500 or 6 million cubic per volume annually. If I am not wrong, probably the all other activity is making an excavation altogether cannot be kind of phenomenal. Therefore, the question of sustainability will arise. Have a target like government at the mind is not that not that we carbon dioxide, burning vehicles, thermal electricity, and then net zero mills. Not that itself. We are heading for is inevitable. A country like India not survive without. But at the same time, the acceleration that is happening phenomenal. Until 10 years back, someone was talking about adding 30 megawatt, 30,000 megawatt power for in 1 year, not have but now we are adding. This is the speed of change. So unless the open cast mining, I think for making the open cast mining operation possible, and making our making process in the morning progress we talked about department. Very true, particularly in case of people are getting. I think the deepest mine is one of the key challenges of these deep mining, deep open cast mining operations are going to track. Like they're taking dumpers, any size of dumpers, out from depth until the top, humongous challenge. Not an easy. A lot of breakdowns, a lot of failures will happen. And of course, when we are talking about interaction, worsening of their all this is going to happen. And only that's the reason why the initial planners that was planned by the Russians. Dragline. But dragline is the machine.
which replaces dumpers. It is a drag line making an overburden removal for dumper. It has multiple and its major advantage. Because in the surface mining operation, dumper is a major cost. At the cost could be less than 40% of the, at least 40%. Indirect, we are saving 40% of the cost operation. Then coming to the productivity, the productive machine. Probably we have the smallest size which is working anywhere in the world. Minimum size today, 40 cubic. Our neighbor Sasan coal mine, they operate. And a hugely productive, very long life. One drag line can last up to 30 years of the entire life of the mine. Buy a drag line, forget it for the entire life of the mine. No due to the buy dumpers and replace the machines. That's another advantage. Therefore, I picked up as capital intensive machine back one drag line. Just a rough idea I may give about the 2496 line. The capital is implied in my think of drag line, very important. And make full use of drag line, we have to make our drag line. We have to ensure that the drag line doesn't fail. Statistics say 80% of the failures surface mining machines in drag line, this is an average number, drag line are the random failures. Just happens, can't predict it. But with the advent of technology, the IoT systems, the technologies of Industry 4.0, like Mercedes, how the processes communicated, network of sensors. Today, when I was working in NCL, engine had hardly two modern machines, MK30B dumpers, military dumpers, they had hardly. Now we have in a diesel engine itself, we will have the 35 smart sensors. You can pick up the data, process it the way you find it. So all these modern machines are coming with a smart sensor, can smartly capture and therefore make and breakdown of machine as a very capital on two-way count. Consume the stress, also the machine down. Multiple. That's why I told them that. Can we think of a strategy worldwide is also evolving. That's the reason why I say, can we think of doing something for NC as a part of with the predicting the field? The big area, I've only picked up based on the data I get from South NC. Small area based on the time stamp date. Predict the field. Like human being. We have, predict. Since machine runs, deteriorate. Behavior is help of the modern machines. It's possible today and people are doing it to understand the breakdown behavior of. I'll begin by, guys, can you run the first? Sir, because we talked about the product, I have given the fourth answer. What is the mind? Mind. Second is equipment system. And shovel dumper mechanism. Equipment system. Just from the conditions like the hollow base condition. All this together, not total, makes the productivity. Happy. Breakdown. The production, because production and maintenance cannot stop. If the machine is available, we produce. Machine breakdown we have. This is the source that this process is constructed side by side. And in the process, in this context,
We need to understand what data speaks. That the maintenance tab, this, I have the maintenance practice all because way back in all began the react. Machine is running. Then the preventive maintenance, calendar based maintenance. 5000 घंटा machine, stop it, change engine oil, lubricants, gas filter, air filter, etc. And then we move from here because reactive maintenance not think of for such a not allowed. Let's start with preventive so far. Essential has been pioneer. First, they had the condition way back. I came here in 98. It was existing. The idea was that even the prevent stop the machine deliberately, even if the machine was. If you look at the sample file, you can see that the truck has still done 200 hours. If we stop it, change it. On pause on to is that unnecessary. Right? Second is that cost. Some people in ingenuity is all because of the human ingenuity that we have been here and talking of artificial intelligence, and to some extent, I would agree to that. One day it would replace. It was like down to level 1.5 or 1. Now the age has known about the chat GPT. Chat GPT 4 IQ is close to that. And chat GPT 5, the next 5, they have the chat GPT versions 9 and etc. 1,000 times, maybe 2,000. I will have more IQ than the. This is where we are heading. I mean, laboratories are manufacturing humanoids. I would recommend people to just note down one name. There is a humanoid called the Amanda. She has been given the citizenship of very smart person. So that they are heading but coming back. So condition-based monitoring started. Even when we didn't have IoT for the point or being hit. So condition-based monitoring in medicine. Now since what was important? The condition of the machine or the condition of the machine. Said in the beginning, know the condition of the machine. What do you want to know? Fuel consumption is there. Water temperature is there. So, like the pump is not working there. So all these things, all this large amount of data is captured. Only we need to analyze this data for this started. First, that's what the prediction. One of small exercise we did, I'll still go. We could get some of the, we lay our hand on some of the stuff as not very good data. Science have. This is the data type. Tagline one data. A. What is the status? The normal. Okay. So this was the timestamp of the data, and we thought
Why not to predict breakdown? Track the breakdown data and predict the breakdown. When is going to go next? Not classify the data. Varieties of breakdown for other machine. For this data challenge was can we use that AI for machine learning? So we extracted the data and counted the mechanism breakdown. Still there were many challenges. It was not right, not possible also to build because now the machines are not here days and are in the field. Expect. So data analysis, but once the data is over, the mind is and we applied the techniques that for predictive stock market. Then it exhibits some behavior. Some kind of data analysis there is a data with and we applied this model, the machine learning. Robotics. So we applied this model because the nature of what data was. In this model, the phenomena is that general classification machine, the error is constant. But in these kind of models, based on the times, since accordingly you have to. So we first converted, as I said, 20% data, 100 data. Then we decided that for the hyper or not get it. Also try to measure the hyper. They are not part of the rate. So for the rate of indicates that machine have to track 20 predict. We and we track the model. That is one predict. And then we move to we increase the data set. Capture the second. When we process this data, 100, the upper curve, we decided how many times the machine will have to train. That upper curve which we can we have to run that model 30 times, train the machine. And when we predicted, once generally in academics, we process hundreds of data and try to work out some hardware. In mining, surprising to find that the next failures, not all 700 data were required. Only last 4 data was required. Something like analogy is that suppose today, if I'm trying to predict my health or health, if I make use of the data of my when I was 16 years old, there is no because like humans, machine is also deteriorating. Continually deteriorates. Suddenly we found that last 4 are what
failure predictions, we could manage up to the 12 hours. And when the machine was predicting, yes, after so that's far. Compared with that data, there was a gap of 12 hours. So this was quite revealing two things. Take the breakdown behaviors. Just the beginning, as I said, it's a big area on the small effort to understand the breakdown behaviors, behavior of the human. So this was some statistical parameters tested. Because in any when the AI or could be RMS with this. This was the outcome. So this is also developed sort of a app for this. Our students, tech mining engineers, working with the math and computer, they developed kind of app that tested it. Gave an HMR, predict the failures. It was being quite correct to plus minus. Any question on this? Because this area is expanding like anything. And I'm sure people might have this exercise was done 2 years back. After that, the COVID intervened, and for variety of problems taken. The idea was that component go to the individual breakdowns. So this is all from my end. Thank you so much. Thank you, Raja. So, first of all, it must understand the topic that about four aspects, that is planning and designing. You have been working here. So, tagline is the core strength of, and running successfully these taglines be important for us. Spoke about machines to talk, speak, but we as human beings can't understand their language. They have to put up, they have to interpret data they are emitting that can work out can that machine taken. All this can be done through artificial intelligence. Think towards it. Interesting to that one of the of really that's the future of the thing right of topic and really now it request Professor K. Pradhan sir. Malik sir, yes sir, my distinguished professors, friends, मैं कोई स्ट्रक्चर्ड बताऊंगा नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स देखता हूं. मैं एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में पिछले 11 साल से हूं. मैं पहले आईबीपी में था, फिर मिनिस्ट्री में रहा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में. देन अभी 2013 से अभी पढ़ा रहा हूं बच्चों को. और हम लोग यूनिवर्सिटी को डेवलप कर रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन वर्क इन इंडियन माइंस. अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट कोई ब्रांडेड नहीं है. जैसे हम आईएसएम, आईआईटी, एनआईटी में तो ब्रांड को ज्यादा वैल्यू देते हैं. तो एक आईएसएम का स्टूडेंट आता है तो हमारे स्टूडेंट दब जाते हैं देख के. बट वी हैव रेज द स्टैंडर्ड ऑफ अवर यूनिवर्सिटी. आप लोग को बुलाता हूँ. वी हैव गॉट एक्टिव 8 लेबोरेटरीज, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी. हमारे पास 10 टेलटेल है. बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं कि भैया ऐसे ट्रू फॉल होने के पहले कैसे सिग्नल देगा. हम लोग एक गैलरी बनाए हैं, वहां बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे टेल यूज करना है और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिल्ड अप यूनिवर्सिटी एंड कोल इंडिया इज ए बिग सपोर्टर.
एनसीएल में बराबर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी जगह कंपनी में भी जाते हैं और बच्चों को एक्सपोज कराते हैं वर्किंग कंडीशंस के अलावा हम लोग बच्चों को इवन फॉरेन भी ले जाते हैं। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। यू डिसाइड टुडे, आफ्टर टुमारो यू कैन फ्लाई टू चाइना और यू कैन गो टू बैंकॉक और एनी अदर प्लेस यू वांट टू। हम लोग बराबर बच्चों को फॉरेन ले जाते हैं, दिखाते हैं कि हाउ माइनिंग। अभी मैं गया था दुबई माइनिंग शो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पर दुबई में करीब 250 से लेकर 300 माइंस है और सारा माइंस में मैनेजर है इंडियन, मालिक लोग सब शेख है। इतना खुशी लगा। मोस्ट ऑफ दी माइंस आर बीइंग ऑपरेट रन बाय इंडियन मैनेजर्स। मेरा सौभाग्य रहा कि सबसे मिला और वो लोग थोड़ा पॉलिसी चेंज के, दे आर गोइंग फॉर इंडियन माइनिंग बैकग्राउंड। ये एक तो जॉब्स के लिए भी एक अच्छा था। वहां पर एक एग्जीबिशन हुआ था, करीब 3,500 लोग कॉल हुआ था, 2 दिन का था और बहुत सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट को दिखा है। 2 दिन इक्विपमेंट और इंडिया का करीब 15-20 स्टॉल था। कोल इंडिया से भी लोग थे, बस एक डेलीगेट फ्रॉम कोल इंडिया वेयर देयर। एक अच्छा हो रहा है कि आजकल कोल इंडिया का हमारे इंजीनियर्स मैनेजर्स दे आर वाइडली विजिटिंग अब्रॉड वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। एक अच्छा ट्रेंड है। वहां एक चीज मैं कुछ चीज पॉइंट आउट कर रहा हूं। वहां एक चीज देखा, ड्रिल सिमुलेटर। ये सिमुलेटर कंपनी है जो आपको सिखाते हैं डंपर कैसे चलाओगे, ड्रोजर के ड्रैगलाइन का सिमुलेटर है, सॉवेल का है। वहां मैं ड्रिल का सिमुलेटर देखा फंक्शनिंग और मजे की बात है दैट वाज डेवलप्ड बाय एन इंडियन कंपनी। और फरवरी में हम सतना में लास्ट ईयर हम लोग स्टार्ट किए थे माइनिंग एक्सपो, क्योंकि सतना एक माइनिंग हब है। वहां से सिंगरौली, उमरिया, एससीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनएमडीसी माइंस, 10 एक सीमेंट प्लांट, देयर आर विद इन 150 टू 180 किलोमीटर रेंज में। लास्ट ईयर सीएमडी साहब आए थे वहां और दिस ईयर वी आर हैविंग द अगेन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ फरवरी 21। ये सिमुलेटर कंपनी को बुलाए हैं, ड्रिल सिमुलेटर वो प्रैक्टिकली वहां डेमोन्स्ट्रेट करेगा। आई रिक्वेस्ट यू सम ऑफ यू टू कम एंड सी। एंड इतना सस्ता है, जो बाजार वाला जो अभी ब्रांडेड सिमुलेटर उनसे 1/10 कॉस्ट में उन्होंने मार्केटिंग कर रहा है। एंड मार्केटिंग के लिए लॉन्चिंग करने गया दुबई। तो बोला भैया इंडिया में करो, इंडिया में बहुत जरूरत है ड्रिल्स का। जैसे सिंगरौली में यू मस्ट बी हैविंग 200 नंबर ऑफ ड्रिल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, 100 मिलीमीटर से लेके 250 मिलीमीटर, 312 मिलीमीटर डायमीटर ड्रिल्स आप लोगों का पास है। ये अदर थिंग आजकल, इसके अलावा मैं आता हूं इंडिया का हालत। अभी स्लोप स्टेबिलिटी में बहुत सारा फेल्योर हो रहा है। अभी रिसेंट वाज मादरी के पास में एक तो लाइमस्टोन माइंस में हम लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अभी एकेएस में हम लोग इतना स्टेबिलाइज हो गए, इस साल हम लोग ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट 2023-24 फाइनेंस एक कंसल्टेंसी काम में हम लोग बराबर मादरी के साइड में जा रहे हैं। वो मादरी का ओबी डंप को देखते देखते मैं प्रेडिक्ट किया था कि ये तो गिरेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 1 मंथ वो गिर गया। देयर वाज नो फैटेलिटी, ओनली 15-20 डंपर, 5-6 एक्सकावेटर दब गए। क्योंकि ये जो साहब बोलते हैं ना, मशीन बात करता है, हर स्लोप बात करता है, हर स्लोप अपना दिखाता है। जैसे कोई भी कपड़ा फटने का पहले वो कुछ इंडिकेशन देता है। स्लोप स्टेबिलिटी के लिए हम लोग भी 10-20 माइंस का स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी किए हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल बनाए हैं। वो सब छोड़कर हम सबको बोलते भैया एक राउंड लगाओ स्लोप में, आपको करना कुछ नहीं है, एक राउंड लगाओ, स्लोप को थोड़ा देखो, इधर उधर चारों तरफ देखो, खाली ऑब्जर्व करो। जहां भी छोटा सा क्रैक है इमीडिएटली रिपोर्ट इट, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू विल हैव ए फेल्यूर। हमारे सतना का पास मां शारदा देवी का मंदिर है। मंदिर में भी उनका रोड में जब क्रैक आया, दे अप्रोच कर, साहब आप लोग आगे थोड़ा जोटे करके बताइए क्या है। मंदिर का इंटरेस्टिंग है, शारदा माता मंदिर का हार्ड है, उस एरिया स्ट्रांग है 10 मीटर तक, 10 मीटर का नीचे सॉफ्ट है। एंड सिंस इट वाज वहां का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द टेम्पल हम लोग को बुलाए थे, उन्होंने सबको यही बोला, ये लोग जो सजेशन देंगे आपको इम्प्लीमेंट करो।
पहला चीज आप लोग देखे होंगे, वहां बहुत सारा मंडप बना दिए थे, सीमेंटेड कंक्रीट मंडप, फलाना मंडप, इसका मंडप, उसका मंडप। हम लोग बोले मंडप को तोड़ो साहब, कितना मंडप है सबको तोड़ो। एक आध छोड़ के करीब 8-10 मंडप तुड़वाए हम लोग, क्योंकि जितना लोड आएगा उसका ऊपर उतना चांसेस ऑफ फेल्यूर विल बी देयर। मैं कॉमन सेंस बात कर रहा हूं, मैं कोई जियोलॉजी जियोटेक्निकल रॉक मैग्नीस बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन सेंस से उनको। उसका बाद हम लोग, हमारे जियोलॉजी प्रोफेसर भी थे, उसका दूसरा चीज बोला जितने टेप है, टेप जितना 2 या 3 टेप रखो, बाकी सब बंद करो। एक आदमी टेप खोल देगा, पता चला वो स्लोप में पानी गिरते गिरते गया और स्लोप धंसते जाएगा। अभी आप जाएंगे, मुश्किल से 3 या 4 टेप है, और अगर टेप है तो यू मस्ट इंश्योर दैट लीकेजेस शुड नॉट बी देयर। अगर लीक होता है, लीकेज होता है, फ्लोर में मत डालो उसको, एक पाइप के द्वारा बाहर दूर में फेंको। सो मेरा स्लोप स्टेबिलिटी के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस, आई माइट हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ स्लोप, एक ही सजेशन है, आप प्लीज एक ऑफिसर को लगाओ, तुम्हारा काम, एक ऑफिसर मतलब मोनोटोनस हो जाएगा बेचारा, वो सोचेगा मेरे को कहाँ मट्टी गिट्टी में भेज दिया। राउंड हर शिफ्ट ने somebody should go around, अपना जीप लेके जाए, स्लोप में घूम के आए, आपका 90% ऑफ स्लोप पता चलता। मादरी वाला वही हुआ है, छोटा क्रैक हुआ, थोड़ा बड़ा, छोटा क्रैक हुआ, बड़ा, बढ़ते बढ़ते ऐसे आया तो फेलियर हो गई, थैंक्स गॉड। और अभी जितना भी मेजर एक्सीडेंट हो रहा है, स्लो फेलियर हो रहा है। थर्ड पॉइंट, अभी आप लोगों का यहाँ एनफो के लिए काफी चल रहा है सर, एनफो का फाइनल हो रहा है, यूज ऑफ एनफो। एनफो में बड़ा बढ़िया चीज है, एनफो में 6% डीजल डालते हैं। अभी हम लोग राजस्थान एंड कुछ माइंस में एनफो का स्टडी किया, भारत सरकार माने पेसो अलाउ कर रहा है कि डीजल का जगह में आप आपका जो लुब्रिकेंट ऑयल है यूज्ड वाला, तो फेंकते हैं आप या बेच देते हैं, उसको यूज करो। तो सिंपली ये कर दो, क्या बोलते हैं, साफ कर दो, देयर आर क्लीनर अवेलेबल। साफ करने के बाद उस ऑयल को डीजल के साथ मिला के एनफो में यूज करो, फुल सेव मनी। जब एनफो इंप्लीमेंट करने जाएंगे, देयर आर 25% तक डीजल ऑयल को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन एनफो, कानूनी अलाउड है। और ये जो दीपक नाइट्रेट है, उन्होंने एनफो ब्लेंडिंग का भी एक यूनिट बैठाता है हर जगह। एक और चीज अभी आ रहा, ब्लास्टिंग वालों के लिए आप लोगों के पास आ गया होगा, आप पैसों वेबसाइट में जाएंगे, देखेंगे 2025 के बाद इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर आपको अलाउ नहीं करना, बैन हो जाएगा कंट्री से। आप लोग देखे होंगे, संज्ञान लिए होंगे। तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? एक तो है वो आपका ऑर्डिनरी डिटोनेटर में सेफ्टी फ्यूज लगाओ, माचिस लगा के भागो, ये एक तो है। बट इन ए सिचुएशन लाइक सिंगरौली, जहां हजारों टन ब्लास्ट होता है, ये तो भागने वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ के लिए अभी बहुत जगह अभी ट्रायल हुआ है, रिमोट ऑपरेटेड फायरिंग का पहला ट्रायल हुआ है वेदांता का जिंक माइंस में, अंडरग्राउंड में। तो उन्होंने रिमोट ऑपरेटेड फायरिंग एक नया सिस्टम है, ओरिका ने डेवलप किया है। तो ये एक नया चीज आप लोगों का 2025 के बाद इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आपको बैन है, इज नो, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये इंस्ट्रक्शन है, दे हैव गिवन रिलैक्सेशन फॉर 25 के बाद आपको जाना पड़ेगा इधर ओडी, जहाँ छोटा छोटा ब्लास्ट है ओडी और सेफ्टी फ्यूज में कर सकते हैं, या बड़ा ब्लास्ट के लिए यू थिंक ऑफ ऑल्टरनेट। सोलर का यहाँ कोई है? सोलर तो देखते हैं, कोई है सोलर? सोलर सोलर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग बालाघाट में एक मैंगनीज माइंस में कंसल्टेंट है हम लोग के। सोलर जो आपका जमीन में है, सोलर पैनल जमीन में आप लोग बैठा है यहाँ पर, वहां सडनली देखा नीचे कुछ डाला है वो। मैं पूछा भैया ये सोलर तो सोलर है, उसका नीचे ये सब क्यों तामझाम कर रहे हो? उन्होंने क्या किया है, दे हैड हायर्ड सम कंसल्टेंट, इट्स ए प्राइवेट कंपनी, एपी त्रिवेदी बोल के है, मैंगनीज और माइनिंग, मैंगनीज और में पैसा बहुत है। का मैंगनीज का कॉस्ट शुरू होता है, खराब ग्रेड 7,000 रुपया, अच्छा ग्रेड 18,000 रुपया पर टन। एंड इतना इनोवेशन वो लोग करते हैं, एक छटांग भर
पुअर क्वालिटी को फेंकते नहीं, वॉशिंग 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 करते करते बेचते हैं। भाई सबसे नीचे ग्रेड तो 7,000 रुपया में बिकता है। उन्होंने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया, उन्होंने सजेशन दिया सोलर वहां क्या होता है, बालाघाट आप गए होंगे तो 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है और ठंडक आता है, और उन्होंने देखा हमारा जनरेशन में कमी आ रहा है। उन्होंने क्या किया, कंसल्टेंट उनको सजेशन किया, पहले क्वार्ट्ज डालो, क्वार्ट्ज लेयर का 10-12 सेंटीमीटर का क्वार्ट्ज का एक लेयर डालो, उसका ऊपर डोलोमाइट पाउडर एकदम व्हाइट पाउडर जैसे उसको बिछा दो। नतीजा क्या हुआ है, रात को 4 घंटा उनको एक्स्ट्रा उनको वो पैनल गर्म रहता है। फिर कुछ लोग हमको बोले अल्ट्रावायलेट रे वे छोड़ दो, भैया हर रे का पैदाइश तो हीट है। जब 4 घंटा उनको मिल गया रात को 8 बजे तक हीटेड प्लेट्स, जनरेशन होगा ही। these are some of the things I have seen personally, and हम लोग उसमें काम कर रहे हैं अभी। क्वार्ट्ज थोड़ा कॉस्टली होगा तो बोल के हम लोग सोच रहे हैं बासाल्ट यूज करेंगे। बासाल्ट आपका जो चंद्रपुर एरिया में जो लोग काम किए उनको दे मस्ट हैव फेस बासाल्ट, बड़ा रद्दी टाइप का और है। हाँ, इतना हार्ड है कि आप परेशान, बट अंडरग्राउंड में लोग उसका फायदा भी लेते हैं। तो बासाल्ट से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर बासाल्ट हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है बासाल्ट। तो दीज आर दी सम ऑफ द पॉइंट्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Professor Pradhan has been doing human service by teaching young mining engineers. ने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए जो कि हम लोग सकते हैं। हम फेलियर का आपने बताया कैसे उसके कंटिन्यूअस इंस्पेक्शंस करेंगे तो उससे हमारी नज़र जा सकती है, कहीं भी वहाँ क्रैक है तो mainly it indicates to failure. Then you spoke about how we can use weekend trial case of बाद आपने यहाँ भी सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, अबाउट रात में भी कैसे सोलर पैनल्स बनाया जा सकता है, पार्ट लेयरिंग एंड लाइट कैन राइट तरफ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स की। थैंक यू। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर एस.के. शर्मा था शरफ। In 2018, the PM Prasad sent a mail. I was head of the department, and he said we want IIT BHU to be academic partner in ICOMS first. I said, sir, why do you want IIT BHU to make academic partner? Why don't we become knowledge partner? And with that, an NCL IIT BHU MOU signed, and many works taken shape now. So personally, I feel it's highly satisfying to be part of this 6th ICOMS, and I congratulate Team NCL for consistent enthusiasm. I was there on the first ICOMS. Many organizations start and take an initiative, but with time they not take that much interest. I don't find any gap in the enthusiasm of NCL in organizing the 6th one. It is appearing as if first. This I would like to take you a different, I would say, space. I'll use the word speed. My colleague Dave has already set the tone for way forward. Professor Rai, deep tech into it, was very specific into prediction of failure in drag lines. प्रधान साहब ने प्रैक्टिकली धरातल पे हम लोगों को ला दिया था। इस सब के बाद let me take you to the ecosystem in which mining is operating today, specifically coal mining and underground surface mining. On 23rd November 2023, COP28 was operating in
Dubai. The one data which many of you might have missed, it, not very significant. In Sharm el Sheikh, COP 2017, you had 636 people present, COP 27. They called themselves fuel lobbyists. 636 people called themselves fuel lobbyists were present in COP 27. In COP 28, the number rose to it rose by 3.86 times. So it went from 1200 plus. Sorry, four times, almost four times. So 2500 or so. 2500 or so people were present in COP 28 calling themselves fuel lobbyists. Just two data I'm saying. 636 in 27, 25, nearly 2500 in 28. Now what does this tell us? If your lobbyists are increasing, that means the industry is getting more and more insecure. World over. World over, fuel lobbies are more and more active. People in COP 27 were just 50,000. In COP 28, 1 lakh people joined. And more NGOs are joining. So what does the increase in data mean? It means causing discomfort coal mining at global level. India gradually has enhanced power, and that India today said that we will not permit you to regulate our coal mining level and activity. This is the stand of India. They said that reduce coal mining. But India has taken a stand in COP28 that you cannot regulate the scale at which we will do coal mining for energy use. Now let's differentiate the fuel with energy use and transportation and other use. World over, people are now, even now, attempting to stay for energy use, using coal for energy use. They are ready to forego transportation, fossil fuel use for transportation, but not for energy use. However, there are countries like Japan. Japan has said that Japan depends, one third of the Japan energy comes from your coal route, thermal power route. Japan has promised in COP28 that it will no more install any new plant for thermal power. Japan has committed. Germany had almost closed all. Now, as it was said in earlier session that some of them got tempted to work in coal mining. So this is the ecosystem in which coal mining is going to operate today. Now, COP28 for the first time, people are asking, has given 400 billion US dollar cost of loss and damage at the global level because of the climate change of the order of 400 billion US dollar. So it's a huge cost. And I'll say ameliorate that or settle that or handle that. Only 0.02% of that amount has been given fund. So the fund being allotted very less and the impact of it at global level is very high. Since COP26 at Glasgow, we have been asked to reduce coal use in phased manner. Let's come to other issues. Now, why is coal mining important? India is determined to adopt an economy that has committed itself for 5 trillion US dollars. And with Modi ji around and most probably जैसा कि 3 राज्यों का नाम आया है 24 में भी अगर मोदी जी आ जाते तो ये 5 ट्रिलियन का छूटना नहीं है. अब 5 ट्रिलियन अगर करना है तो आपको एनर्जी देना ही होगा and that has to be through thermal route only. The energy basket, the composition of the energy basket changing drastically. Renewables are coming up.
India has been able to increase its share of renewables at a much faster pace than expected of India. So, but coal is not going, and I concur with the person who said that for the next year, मलिक साहब ने कहा 50 साल तक कहीं नहीं जाना है. ये रियलिटी है. हम लोग जितना हमारा पावर बढ़ेगा उतना हम कहेंगे हमको कोल माइनिंग करने दिया जाए. वॉल्यूम टर्म्स में, प्रोडक्शन टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल बढ़ेंगे हो सकता है ये रिडक्शन आए, बट आपका प्रोडक्शन अगर 1 बिलियन 1.2 बिलियन हो रहा है वो होता रहेगा, वो नहीं टच. कम से कम 20 साल तो बिल्कुल नहीं होना है. आपने नेट जीरो का भी कमिटमेंट 2070 तक किया है, इंडिया ने 2070 तक किया है, तो आपको कोई प्रेशर अभी 23 तक काफी समय है. आप नाउ हैविंग सेड दैट, okay, now I'm submitting, if this is the ecosystem for coal mining, then what should coal mining to be functional and acceptable to society? Ultimately, we are just one activity of the society, coal mining. And World Bank report, one of the development reports of World Bank said that there is a conserve of natural. So normally where natural risks occur, the people surrounding over there are made to face all kinds of environmental and risks when your law and order. So in that light, how to coal mine so that we are societally and socially active? That is the question that needs to be answered in every step of coal mining planning and both. And I am of the firm opinion that we have the competence of both planning and execution in a society that is acceptable coal mining process. And NCL has very good examples. I was, I think last month I was in Delhi and I made a statement in front of that best practices that are being done by coal mining. My bigger question is how to make coal mining societally acceptable. Now, your best practices are not coming in front of the society. Your best practices are being forced through NGO society in a highly escalated manner. So what will happen? There will be a negative effect. If you just tell people that these are the things that we are doing good, so they will consider trading it off. And if you can mitigate your worst thing and upgrade your best practice, that will change the perception. पूरा माया काशी से आता हूँ, में माया के perception is up. If you perceive that people are helping me, you will think that however seriously you may try to help a person, but the fellow perceives, selective perception is that you are his enemy. Your all work will be down the drain. That needs to be addressed very seriously. So one of my suggestions is 5-starring of the mining activity. And this is the first use of this point for ICOMS 3. When I'm saying 5-starring, what does this mean? 5-starring means a 5-star में कोई भी डिश बनता है तो कुक उस डिश के बनने के बाद प्लेटफॉर्म को ऐसा कर देता है कि अगले डिश बनाने के समय प्लेटफॉर्म पूरी तरह से फ्रेश हो. It is sanitized, cleaned, and all the things that have been best products are taken away. Similarly, आपको करना क्या है? मैं एक थर्ड पार्टी की माइनिंग इंजीनियर नहीं मान के कोयला निकालना है. आपका NCL ने प्रूव कर दिया, ओवरबर्डन में भी वैल्यू मिल रहा है. कोयला निकालिए, ओवरबर्डन से जो वैल्यूएबल्स मिल रहा है उसको निकालिए, रिक्लेम उस लेवल पे करिए कि NCL 50 किलोमीटर का एक नया स्विट्जरलैंड हो जाए. आपके पास इतनी बड़ी वाटर बॉडी है, क्लीन कर दीजिए, बगल में रिजॉर्ट कर दीजिए. चार का इसको दुर्गम बोल रहे थे, आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. हम लोग PCL तक जा रहे हैं बनारस, लोग लद्दाख तक जा रहे हैं श्रीनगर से.
उत्तराखंड में देहरादून उतरते हैं, चोपता तक जाते हैं, और केदारनाथ से जाते जाते तो कई लोग पैदल जाते हैं, तो कितना टफ होता है. First, break this mindset that Singrauli is Durgam. Singrauli is Sugam. Singrauli needs resorts. Singrauli needs boating place. Singrauli needs recreation areas. And इतना बड़ा वाटर बॉडी कहाँ है मेट्रो में? उसके बगल में कुछ रिसॉर्ट हो जाए. जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो पतरातू है ना, रांची के बगल में पतरातू, बगल में देखो कितना बढ़िया पिकनिक स्पॉट है. अगर कहीं यहाँ पे पिकनिक स्पॉट हो जाए, बॉम्बे से 2 घंटा में फ्लाइट और 4 घंटा का आप पैकेज, 2 बार आप इसको एडवर्टाइज करिए, लेट अमिताभ बच्चन या 1-2 करोड़ देंगे, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे. 2 बार वो यहाँ रुके तो सब बॉम्बे वाले यहीं आ जाएंगे. उनको लद्दाख से ज्यादा आसान पड़ेगा. यू हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट. दैट्स द थिंग. The 5-starring of the mining activity has to be done. Don't be defensive. We have been defensive far enough and far enough. Don't need to. आरा कोयला से कंप्यूटर चला के तुम्हारे ही अगेंस्ट एनजीओ लिख रहा है, तुम डिफेंस. अगर कोयला ना निकालो, बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी, प्रिंटर नहीं चलेगा, प्रिंट नहीं होगा. तो वी नीड नॉट बी. हमको वाल्मीकि बना के रख दिया गया है. सारा काम हम कर रहे हैं, तबीयत हमारी खराब हो रही है, हेल्थ हम झेल रहे हैं, और उसके बाद पूरी सारी ऊर्जा का प्रयोग करके, उपयोग करके, एंड हमको वाल्मीकि कहा जा रहा है कि पोल्यूटर. I will endorse the statement made by sir. He made a statement that, sir, please, we should not be considered as earth maker, but we should be considered as earth breaker. Earth maker. The mining industry is an unique opportunity to create and recreate another ecosystem. I am fully convinced this. Same करने के बाद फंस आपके माइंड में जाके देखिए, काई में सब माइंड ठीक है, आई हैव बीन देयर. वी अप्रिशिएट होल हार्टेड. एनसीएल के कोई भी माइंड डाला से कम किया. हम लोग कल आ रहे थे डाला से, हाँ तो कहाँ हो गई, थोड़ा सा खोल दिए थे. And I have visited all the mines of it. I have visited SCL also. I have visited MCL. Visit. I tell you, mining, they by and large much more safe, much less polluted. Mining, I'm saying, but wherever it gets conglomerated with antique का धुआं हो जाता है, that villainizes us. तो जो ये प्रपोज कहाँ है? George can help us in. Can tell us कि क्या कितना % माइनिंग के कारण है, बाकी 20 के कारण है, बाकी सिविल वर्क के कारण. So we need serving very seriously, and you can do that. Next is I have made a statement again for this, that technology today has to be afforded that reduces the carbon footprint. भोला सिंह सर आए हैं तो सही समय पे. सिंह साहब, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी today has to be afforded, I am using the word afforded, to reduce the carbon footprint of the mining activity. And post-mining concerns, my friend, post-mining concerns, they need to be addressed meticulously. We are villainized primarily because of our post-mining. And in that, I will say reclamation, afforestation. These two aspects, I am personal witness. Things was there when I made this statement that mining industry is doing some very good things, but it is not coming in public domain. सर दिल्ली में मैंने कहा था, यहाँ जैसे मैंने देखा है अफॉरेस्टेशन, मियावाकी खड़िया में मैं गया था, मियावाकी इतना सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर. We can very well replicate that. I have been can further put it for floriculture and horticulture, and that will enrich, then repopulate. Once you have good jungle, you can repopulate the indigenous or endemic species in terms of flora and fauna both. We are only focusing right now on flora. Kindly extend it for fauna also. अब हम अगर नामीबिया से चीता ला सकते हैं, तो यहाँ के खरगोश को आ ही सकते हैं. अगर हम fauna को भी हम कर रहे हैं कहेंगे, I was talking with forest and they said that
idea that if we establish the flora and fauna goal, then the whole thing that you have start with, that mining is creating forest that can be recreated again with better and smarter combination of it that enrich even the productivity and generate employment people. And then I'm also saying that the huge opportunity trying to create a resource of local endemic species, seeds, and intangible. Already NCL is under its CSR. When I'm saying intangible, I mean the arts, local arts, craft, कल्चर एंड ट्रेडिशन जहाँ बैगा आदिवासियों के पास एक नारियल लेके जाते हैं और बता देते हैं पानी तो इंडिजिनस नॉलेज है वो कोडिफाई हो जाए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो जाए फॉरेस्ट को कैसे करना है उसका रेंज अगर बढ़ा लें और रिक्लेमेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आई हैव सर्टेन सजेशन वन इज ट्राई एंड एनसीएल हैज डन इट फिल्म बन गई for tourism, boating, हाउस बोट्स उसमें हो जाए बहुत बड़ा वाटर शॉर्ट्स हो जाए सर्कुलर इकोनॉमी का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस एनसीएल दे सकता है तो कल 30,000 लोग जो स्पेस होने वाले हैं इन 30,000 को ही हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी डायरेक्ट रिजॉर्ट्स का और आई वुड लाइक टू एसोसिएट project. Relatively, we are just coded now. Next is M-sand. M-sand is a beautiful concept successfully done. अब इसका एक स्केल में प्रॉब्लम आ रहा है and that must be, I'll say, ICOMS, particularly if you talk with WT, that they can take it मतलब ऊपर के लेवल से इसका सेल हो जाए तो और अच्छा है गवर्नमेंट फाइंडिंग है टेस्ट वगैरह लग जाए कुछ कंडीशन लग जाए कितना परसेंट लेना ही देना है कुछ चीज आप पॉलिसी लेवल पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ देन ओवरबर्डन से एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कोल इफ अवेलेबल आपने टेस्ट किया है आई नो ओवरबर्डन ऑफ सिंग्रौली हैज मेनी फिशेस minerals can give you a lot of revenue then have to go for technology development support, cutting edge technology development, for which again as साहब ने कहा कि हमारे पास इतना बढ़िया प्रैक्टिस माइंड है एंड आई एम रियली थैंक्स हमारे आइडियाज बने तक हैं एंकर ने कर दिया और चिंगुर्दा में सिंह साहब चिंगुर्दा में जीएम से हम लोगों ने टीडीआर लगाया टीडीआर क्यों लगाया उस प्रश्न को मैं शेयर करना चाहता हूँ मतलब अगर आपको लगे जैसे फुला सिंह साहब ने कहा कि आत्मा आप लगाइए एससीसीएल ने टिपका गेवरा तो स्टेबिलिटी रडार खरीदा 7 करोड़ का उस समय होता एंड पूरा डेटा उनको मिलने लगा उन्होंने कहा प्रोफेसर शर्मा यू कंसल्टेंट थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ द डेटा ऑफ द एसएसआर मैंने कहा इतना पैसा आपने ऑस्ट्रेलिया को दिया और एंड ऑफ द डे पे डेटा मिल रहा है आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि कब स्टॉक होने वाला है तो फिर क्या फायदा दैट वाज द क्वेश्चन दैट लेट मी थिंक दैट वी शुड प्रोवाइड एन ऐप लाइक ऑफ कंडीशन ऐप आपके पास हो कब आपका स्टॉक सेल होने जा रहा है और कब आपको उसको इंटरवीन करना है कैब मैन मशीन ड्रॉ करना है ये आप दे सके एंड टुडे आई एम हैप्पी टू शेयर दिस कॉल someone in the proceedings also that we have successfully demonstrated and our TDR project through NCL IIT MOU funding and it is now available in app. ऐप में 5 मिनट पहले उस स्कोप में क्या डिफॉर्मेशन हुआ है वो हम लोगों को पता चल जा रहा है जितने कंसर्न लोग मेरे पास बनारस में भी डेस्कटॉप में मेरे उसका डिफॉर्मेशन आता रहता है और इसी चीज को हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं थोड़ा और इसमें वर्क करना है ताकि हम ये 9 करोड़ का एसएसआर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है कि बीइंग फ्रेंडली बीइंग आई से सपोर्टिव टू फील्ड
Whenever I'm saying that I can provide you solution, there is no snobbery, there is no ego that you people say हम आपसे ज्यादा superior हैं. मैं एक बार सिंगरैनी गया, उस पर मैं लेक्चरर था, वहां पर था राजू करके था, तो कल के आए हो आ रहा मैंने करना है. Why should I listen? तो very simple. I said sir हम खा कहाँ रहे हैं, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी ये कर ले, आप ही का काम कर रहे हैं. तो इट टुक 15 मिनट्स कन्विंस. सिमिलरली आपका काम हम कर रहे हैं, इन चीजों को आप आउटसोर्स कर दीजिए. वी विल अगेन इन बैक टू यू द नॉलेज दैट वी हैव गॉट एंड यू आर नाउ मोर एम्पावर्ड माइनिंग and you have solutions at your hand. Please be more demanding to companies and OEMs. When Singh Saab was telling about spare parts management, the newer concept of spare parts management is the OEM is being asked to maintain the whole equipment for the entire life. It has to maintain 90% of the spare parts have to be supplied by OEM on time, on real-time basis, and 24 hours में बाकी 10% से देना है, पूरे लाइफ का उसका टेका मिल रहा है. And this has been used successfully in Altima, Dimapur, KPC, in Iron Jaya, Indonesia. लाइफ कल गई डंपर की, लेकिन उसके मेंटेनेंस इशू नहीं आ रहा है क्योंकि OEM को पता है कि कौन सा पार्ट ज्यादा फेल होता है. अगर आप अपने वर्कशॉप इंचार्ज मैनेजर मेंटेन करो तो कुछ पार्ट को लाएगा. ऐसा से डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा पार्ट फेल करेगा, तो आपका साइंटिस्ट भी फेल कर रहा है, आपका इस पर इंचार्ज भी कर रहा है. बट OEM वाले को पता होता है कि कौन सा पार्ट ज्यादा डिमांड में है, तो OEM कैन ऑलवेज सप्लाई. So that concept can also be done, and I have a lot to say, but maybe some other time. Thank you very much. Thank you, Professor Sharma. You about the thing. Actually, we have seen system working in COP28, where they have created some focus and they are taking their own agendas ahead. COP28, they have decided that they are not going to stop our mind. Have to spend we are diversifying in options. Then about we have to some IT for that and out in a routine of our mind that past, but apart from history about can the thoughts that are already tracked about events thoughts can extract shares. For that also we are in tag treaty. Please. तो कोल माइनिंग के लिए लोग ने COP28 में अच्छा हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ्लोर हम कैसे रहा. मैं आपको एक और चीज बता, सपना वी आर लोकेटेड इन ए सीमेंट हब. 10 एक सीमेंट प्लांट है हमारा देश में अभी 400 मिलियन टन सीमेंट. अगर हमारा एस कंटेंट नहीं होता 30-35-40% सीमेंट प्लांट बंद होता. दे आर यूजिंग 35% to 40% एस बायस इन देयर सीमेंट. तो आप देख लीजिए अगर थर्मल
नहीं चलेगा, आईएएस नहीं होगा तो सीमेंट प्लांट बंद हो जाएगा, सीमेंट रेड लाइन। तो हमको ये भी हाईलाइट करना है, हम आज तक पढ़ते आ रहे थे बचपन से, हमारा कोयला बहुत ऐसे ऐसे, तो ऐस हमारे लिए भी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हो। थैंक यू। थैंक यू सर। बताया कि कैसे जो है कोयला निकाल रहे हैं उसकी ऐश हमारे बीच हमारे सीएम उपस्थित मालिक साहब, सिंह साहब, टीम एनसीआर पार्टिसिपेंट्स, सेशन का थीम माइनिंग टेक्नोलॉजीज और वे फॉरवर्ड है। सस्टेनेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं। हमारे में एक लॉजिकल मैप, गुड मैप, एनर्जी का सिनेरियो और ग्लोबल सिनेरियो हमारे सामने, और आपने बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव से किया है। मैं सिर्फ थोड़ा मायोपिक में एनसीएल पर्सपेक्टिव में बातें शेयर करना मैंने अच्छा समझा है। जो एनसीएल के चैलेंजेस हैं, डंप स्पेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी है। लोग खेल में जुड़ रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करता है। सब इस बात से भी अवगत है कि डंप स्टॉप नहीं होने के क्या खतरे हैं और क्या नुकसान है। वंस अगर हम एक बार के बारे में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, स्पेस का अल्टरनेटिव यूज वर्ड्स में भी वो एक स्पेस हमारे पास होता है जहाँ पे हम पैनल्स करके या फिर इंक्लूसिव सोसाइटी की तरह हियरिंग स्पेस के बारे में बताया जा सकता है। एक हम एक स्टडी होने की आवश्यकता है। डंप स्पेस के दिशा में भी जिसको हम एक प्रोडक्ट मानते हैं, आज एक मार्केटेबल प्रोडक्ट है, एक छोटा सा पार्ट सैंड है, प्रिडोमिनेंटली सैंडस्टोन है। अगर हम कटिंग टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन कर पाए बृहद स्केल पे और एक ऐसी माइनिंग कर पाए जहां पर हम सेग्रीगेट कर सकें फुल और ओबी को, हमारा मार्केटेबल प्रोडक्ट है का वाइडर माल कंस्ट्रक्शन में देखते ही है। और ऐसा रिसर्च में यहाँ पर आप लोगों की सबसे पाया गया है कि हम लोग वाच के भी बहुत करीब हैं। वाच भी एक हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट ऐड हो सकता है। ग्रीनर सोसाइटी के लिए, ग्रीनर कोल माइनिंग के लिए इवैक्यूएशन फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट है। इसके दिशा में भी कुछ अगर कोई कन्वेइंग सिस्टम, डायनेमिक फ्लेक्सिबल कन्वेइंग सिस्टम के ऊपर रिसर्च हो एनसीएल को और सभी कोल माइनिंग ब्रदर सभी कोल माइनिंग कंपनी फायदा होगा। आप लोग अवगत हैं और निश्चित रूप से इस पे हम लोग काम करते रहे हैं। बहुत बड़ा फ्लीट है हमारा ICMM का मेंटेनेंस हमेशा ही चैलेंजेबल एक चैलेंज रहा है। हमारे एलिमेंट काफी बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट एलिमेंट एक आता है भी हमारा सहयोग कर सकती है कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव के लिए आगे
एनसीएल प्रीडोमिनेंटली माइंस रही है, तो सब बेसिक में काम करते हैं। 12 स्क्वायर किलोमीटर की दायरा है हमारी कुछ माइंस पब्लिक को एग्जॉस्ट करने की काम है। जहां हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो कमर्शियल पैरलेंस में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए तो साथ साथ और इसके लिए हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है अब बेसिन की तरफ करते हैं। मेन बेसिन में स्टडीज हुई है, अभी ओपन कास्ट माइंस के लिहाज से वो वायबल नहीं दिखाई देती है, और एनसीएल को भी अब शायद अंडरग्राउंड माइनिंग की तरफ बढ़ना है। हमारे पार्टनर्स है और उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आपकी भी सहभागिता लगेगी एक कॉस्ट इफेक्टिव क्लीनर कोल के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ा सकें। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये जो अगस्त गैदरिंग है ये इन सब पर भी चर्चा करेगी, सर्च करेगी और सॉल्यूशंस। तो सर मैं पीएल की जो विषय है स्पेस मैनेजमेंट उसकी ओर आप ट्राई किया कि हम स्टेबल कर सकें और ट्रांसमिशन के लिए आपने हित किया, आपने एम सेट किया कि हम कंस्ट्रक्शन इवैक्यूएशन कर दी, आपने फौजी द्वारा विषय में इन बेसिस कार्य हो गया है ताकि सस्टेनेबल कर सके। Ladies and gentlemen, distinguished guests and respected participants, as we draw the curtain on this enlightened plenary session of the International Conference on Technology, ICOMS 2020, my privilege to express heartfelt gratitude to our esteemed speakers who have illuminated their profound insight. Our Honorable CM Sir is here with us. Just all of you, please put your hands together for his presence. For sincere thanks, Devashi Dev Sir, whose very address provided a comprehensive landscape in open task mining. Your wisdom has undoubtedly set the tone for the transfer that followed. I request Dev Sir to please present the memento. Devashi. I request all of you to please put your hands together. A special appreciation goes to Shri S.S. Rai Sir, who shared invaluable perspectives on the predictive maintenance of draglines. Your dedication to responsible extraction and environmental stewardship serves as a beacon for the entire industry. I request DF Sir again to please present the memento for the keynote address of Shri S.S. Rai Sir. I request all of you to please put your hands together. Give a warm gratitude to our honorable speaker. Thank you, sir. Shri G.K. Pradhan sir, your expertise in technological advancements has enriched our understanding of the cutting edge innovations shaping the future of open cast mining. Passion for progress, truly inspiring for us, sir. I request DF sir to please present memento Shri G.K. Pradhan sir. I request all of you, please put your hands together for address of sir. Thank you, DF sir. Shri S.K. Sharma sir, sir, as you said, we are not the earth breakers, we are the earth makers. Have the pride in it. Sir, as our knowledge partner, your contribution to the inception of ICOMS has created a mosaic of knowledge, fostering an environment of learning and collaboration that will resonate long after the conference. I request you, sir, to please present memento to S.K. Sharma, sir.
our honorable keynote speaker. I request all of you to please put your hands together for Shri S.K. Sharma. Thank you, sir. We thank Jitendra Malik sir, DTO NCL, Rajneesh Narayan sir, DF NCL, for chairing this session and being with us. I request all the delegates to please put your hands together and give a rounds of applause for DF sir, DTOP sir for chairing this session, also to our distinguished speakers. We extend our deepest gratitude for sharing your time, expertise, and vision with us. Commitment to advancing fast mining is evident. We are immensely grateful for the impact you have made. As we move forward into breakout sessions and workshops, let the insights from the keynote speakers serve as a catalyst for the meaningful discussions and collaborative debate. Thank you all the participants for being an integral part of ICOMS 2023, and we look forward to continued engagement and innovation in the first technical session after 30 minutes. Let us collectively shape a sustainable and responsible future of Opencast Mind. That's it from my side, and we'll be after 30 minutes in this hall for technical session 1. Thank you, sir. I request all the delegates to please take your lunch in these 30 minutes and come back in this hall for the first technical session. Thank you all.